Back, dear students. So today we're going to do the deleted portion of class 12. Till last for the last 2 years we had some deleted portion going on. So in some chapters, like in 90% of the chapters, I have included deleted portions in the playlist itself, which will be useful to you. But in the chapter instruments, I haven't uploaded the deleted portion. So as pointed out by some of y'all. So I thought we'll start with chapter 1, class 12, chapter 1 of electronics paper 1, instruments. और उसमें जो deleted portion है, I thought I should start with this topic, that is CRO, AC and DC voltage measurements. Okay, it's a very easy topic. So to start with, I thought this would be the best topic. If you have done your practicals in college or you happen to see a CRO, you will understand this and you can practically, whatever you've seen, you can put it into words also. But now let us just see, for majority of y'all or those of y'all who are not going to college, have not seen a CRO, we'll see what it is. Okay, हम देखेंगे कि वो कैसे रहता है स्ट्रक्चर. बेसिकली आपको ऐसे लगेगा कि ग्राफ पेपर स्क्रीन में दिख रहा है आपको. मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, तो मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड कैसे करना है, वोल्टेज कैसे मेजर किया जाएगा सीआरओ के स्क्रीन पे, वो सब ये वीडियो में देखेंगे. ओके, so what we are going to see today is how to measure AC/DC voltage and current using a CRO. So for those who don't know how a CRO looks like, I want to quickly tell you all how a CRO looks like. Now this is how a CRO panel looks like. Please ignore the blue line over here. Just ignore this blue line over here. This is how the panel looks like. और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको AC/DC वोल्टेज मेजर करना बताऊंगी मैं, एंड फॉर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड दिस नॉब. आई होप यू कैन सी द ग्रीन मार्क. ओके, आई जस्ट मेक इट इनटू रेड. this particular knob, उस पे ध्यान दीजिए. It's just like your fan regulator. आपके घर में फैन का रेगुलेटर होगा, आप चेंज करते हैं तो स्पीड बढ़ता है 1 2 3 4. वैसे यहाँ पे डिविजन्स है. वोल्ट I mean, what does it mean is, ये जो एक स्क्वायर दिख रहा है आपको, this one square is one division. Okay, ये एक डिविजन है. तो आप अगर आप ठीक से देखें तो this just looks like your graph paper. नॉर्मल ग्रीन कलर का जो ग्राफ पेपर मिलता है वैसा है. This is your y-axis. I'm sorry, my straight line is not coming exactly straight. This is your x-axis, right? Okay. So axes hai, and then there are squares. So if you start counting, if I have a wave like this, मैंने कुछ measure किया है और मेरा wave कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, मतलब आपको यहां से start करना है measuring. कहां से? axis से, right? So I'll just go to the other side of x because that will be the positive x. So I am measuring from the 0, that is what you call x-axis, from the origin, and not the origin, so x-axis, and then you're going up measuring कहां तक, y-axis के कौन से point तक आपका peak, सिग्नल का पीक जहां स्टॉप होता है वो आपका मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. देयर आर मेनी वर्ड्स टू इट. ओके, तो ये जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. उसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है. दीज आर द टर्म्स यू लर्नड इन क्लास 11, राइट? सो फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जितना भी ऊपर या नीचे, it's not necessary that the signal will go one way. No, it's an AC signal, so it will go positive negative positive negative. ये आपका origin है, right? तो ऊपर जाएगा तो it will be positive, and below the origin is negative y-axis, it will be negative. So in this case, just remove. In this case, you are measuring from the x-axis. maximum कहाँ तक displace हुआ है? ये point तक. उसको trace कीजिए, इसको trace कीजिए. It is approximate over here. अब कितने divisions from the x-axis आपने count किया? कितने divisions, कितने boxes? 1 2 2 boxes.
अब एक बॉक्स का मतलब क्या है, वो ये वाला नॉब डिसाइड करेगा. ओके, दैट मीन्स रेगुलेटर एक पे है या दो पे है या तीन पे है या फोर पे है. इफ आई एम कंपेयरिंग इट विद अ फैन रेगुलेटर, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है. दैट्स हाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, तो कितने डिविजन्स हुए आपने काउंट किया फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू द मैक्सिमम पीक. ये इसको पीक बोलते हैं, राइट. दैट्स द टॉप पोर्शन ऑफ द सिग्नल इज द पीक. सो हाउ मेनी डिविजन्स, टू डिविजन्स. नाउ कम बैक to this knob, ये वाला volts per division. ओके, इसका नाम है volts per division की हर डिविजन कितना वोल्टेज डिपेक्ट कर रहा है. सो इफ my knob is on 1, ये उधर 1 था, then it is 2 divisions into 1. if my knob is on 2, अगर मैंने 2 सिलेक्ट किया है तो 2 divisions into 2. if my division is on 5, then it is 2 divisions into 5. 2 into 5, 10 volts. If it is on 2, then 2 into 2, 4 volts, and so on. I hope I have made it clear. Okay, so now let us move forward and see. This is just basic. That CRO, what all you can measure. You can voltage, AC/DC, voltage, current. क्या कुछ नहीं कर सकते हो आप इसमें से. Okay, so we are going to do only AC/DC voltage measurement in this particular video. Otherwise, it will be very lengthy, and then kids tell me, "Ma'am, or short kar do, short kar do." Fine. So next, what we are going to do is measurement of AC/DC. Now, I have got a waveform over here. Okay, I have got a waveform over here. Okay, so this is the waveform. Okay. Now, this is an AC signal. ये आपको देख के पता चल गया है. You're measuring something and you get an alternating current. Alternate plus minus मिल रहा है आपको. That means it's an AC signal. Fine. अब ये AC signal के लिए, okay, AC signal के लिए I will consider this as the x-axis. Okay. Generally आपके CRO के डिस्प्ले में ड्रॉ किया जाता है. It is a problem of the figure I've taken that the axis is not measured. So we are going to take this as the axis. Okay. Now क्या बोला मैंने, x axis से कहाँ तक measure करना है, maximum peak तक. ठीक है, peak तक. तो यहाँ से you will start counting the number of boxes or the number of divisions for that matter. कहाँ तक peak है, तो मेरा peak यहाँ तक है. कितने divisions हुए, 1, 2, 3. So considering every square is 1 centimeter, they have written it 3 centimeters. ठीक है. Knob देखो, अभी CRO में let us see the knob. The knob is at 5 millivolt. So what will be your voltage? It will be 3 into 5. Oops. 3 into 5 you will get, but this is what voltage, वो भी थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा. ये कौन सा वोल्टेज है, ये मैंने यहाँ तक मेजर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर किया है मैंने. ये कौन सा वोल्टेज है, दिस इज पीक वोल्टेज, VP. Okay, peak voltage VP. But is this the voltage we need? No, we need voltage in RMS, है ना. Voltage measurement मतलब क्या, वो particular signal का कितना voltage है. तो when we talk about voltages, we always talk about RMS voltages. Fine. तो VP और VRMS का कोई connection है क्या? बिल्कुल है. VP and VRMS का बहुत strong connection है, and that connection is VP is equal to, said there is a very strong relation between VP and VRMS. That is, VP is equal to √2 into VRMS. Okay, it is, sorry, √2 into VRMS. So I have directly written it over here like this. √2 का वैल्यू क्या है, 1.414, इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया. तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास VP है, ये जो 3 into 5 मैंने मेजर किया है using the CRO, the screen. I have got it as 3 divisions into voltage per division क्या है यहाँ पे, 5 millivolt. मतलब हर division 5 millivolt का है. तो that also I have done. Okay, so that will come around 3 into 5. So
VP I know, √2 का वैल्यू मुझे पता है 1.414 into VRMS. So can I get VRMS? Yes, definitely I can get VRMS. I can write VRMS is equal to, taking √2 to the other side, it will be VP divided by 1.414, and that you can definitely do using the calculator. Fine. So this is how you will measure the AC voltage. Fine. Now let us continue. Okay, so that is how it will be done. Now, what is the first step? The first step is to measure the peak displacement. Peak displacement is to be measured in centitude. What is graticule scale? Graticule scale. Graticule scale means it is in the form of a grid. ओके ग्रिड में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस है, उसको ग्रेटिक्यूल स्केल बोलते हैं. ठीक है. सो इट्स पीक मतलब यहाँ पे हम क्या मेजर करेंगे? वीपी, जो मैंने आपको बता दिया है. हम एक्सिस से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितने बॉक्सेस काउंट, आप बॉक्सेस काउंट करेंगे. आई विल से बॉक्सेस इन कोलोकियल लैंग्वेज. सो एक्चुअली दोस आर डिविजन्स. ओके 1 2 3. और फिर आप कहाँ पे जंप हो जाएंगे? आप जंप होंगे वोल्टेज पर डिवीजन पे. क्या है, कौन से नॉब पे है, कौन से नंबर पे है? 5 मिली. तो वो 5 मिली से आप मल्टीप्लाई करोगे द नंबर ऑफ डिविजन्स. तो इट इज 3. कितने डिविजन्स है यहाँ पे? 3. 3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वोल्ट्स पर डिवीजन? 5 मिली. सो यू विल राइट 5 मिली. ओके, सो दैट इज how you calculate VP. But अभी आगे देखिए, because this is not what we want ultimately, right? What we need is VRMS, because हम उसके basis पे हम करते हैं calculations, right? So we generally use the RMS value of AC signal. Fine. So what is the relation of VRMS? It is VP upon 1.414 or √2. You have to learn any one formula and derive the other, right? Like what I had in mind when I was in college was VP is equal to √2 into VRMS, √2 into VRMS, √2 into VRMS. तो automatically VP या VRMS का एक बार एक relation ही याद रखना. Then VRMS चाहिए तो मैं √2 उधर लेके जाऊंगी, VP चाहिए तो √2 इधर लेके जाऊंगी. Okay, so anyhow whatever you feel easy you can remember it. And √2 का value क्या है? It is 1.414. Okay, so VRMS you will get by multiplying. Fine. So now in this case it is 3, right? 3 divisions है. अभी ये बहुत बार बोल दिया मैंने, 3 divisions है. 3 division count किया मैंने square, जहां कहां तक? maximum displacement तक. Then I will multiply with the knob of volts per division, that is 5 millivolt. So it will be 3 into 5 milli. कितना होगा ये? This will be 15 milli, right? So 15 millivolt is not the final answer. It is the peak voltage. Okay, so 15 milli is the answer we got for peak value. That is not what is the final answer. Fine. So what after this? What will you find? After this, you will multiply it with. You are going to multiply it with. Divide it with 1.414 to get the RMS value. Now let us see the DC. DC आपको पता है, DC is direct current. It can be either positive signal or it can be a minus voltage also. Okay, so DC signal को कैसे हम represent करते हैं? Straight line, right? It is DC, direct current. So I will again draw the axis over here. Right now, same method. Now in DC there are no peaks, right? It's a straight line. So directly आप x-axis से जहां तक सिग्नल है उतने आप डिविजन्स काउंट करेंगे, एंड वो डिविजन्स आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वोल्टेज पर डिविजन का है नंबर, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, एंड दैट विल गिव यू द पीक वोल्टेज. फाइन. So let us see. As written over here, if that particular line is above, it will be positive, but if it is below the x-axis, the voltage will be negative. क्यों? क्योंकि ग्राफ है भाई, x-axis ये x-axis है, ये y-axis है,
तो अगर नीचे जा रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है 0, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो अगर ओरिजिन से 0 जा रहा है तो नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव. सिंपल रूल्स which you have been learning. Okay, yeah, so this will be +2 because it is above the x-axis. Fine. As I said earlier, 2 into the voltage, the displacement into the voltage per division knob, जो भी है, ठीक है. So जो भी होगा वो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर्स मैंने बताया था आपको, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, सेम मेथड. ओके, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, वोल्टेज पर डिवीजन. बट हियर इन दिस केस देयर विल बी नो आरएमएस, यही आपका फाइनल डीसी वोल्टेज होगा बिकॉज इट्स डीसी, राइट. रूट मीन स्क्वायर इधर निकालने की जरूरत नहीं है. एट एवरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपका वोल्टेज सेम ही है. फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट का डीसी सिग्नल है, तो डीसी सिग्नल हर इंस्टेंटेनियस टाइम पे सेम ही है ना. इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट चेंजिंग. सो whatever you calculate using this is your final answer. Okay, so in this case मेरा जो पिक्चर है दैट पहले वाले स्लाइड में वो थोड़ा सा ब्लर हो गया, इसीलिए ये नंबर नहीं दिखाई दिया वोल्ट्स पर डिवीजन का. So it is 2 volt. What is selected? Where is it selected? It's selected. It's still selected on 2 volts. So from the axis, I am measuring the number of divisions. It's 2 till the signal, and 2 into the volts per division. It is 2 into 2. That is 4 volt is the answer. Okay. So 4 volt is the answer. And what will the sign be? Will it be +4 or -4? Yeah, actually figure का problem है. The axis is not visible. तो you know you can ask me, ma'am मैं axis इधर draw करूँ तो नहीं. Actually क्या है, उन्होंने arrows ऐसा दिया है, ये जो black arrows है ना, वो arrows उन्होंने दिया है और उन्होंने consider किया है कि ये वाला axis है. But they should have drawn the axis. I agree with that. But yeah, this is 2 into 2 plus 4 आएगा क्योंकि एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव y एक्सिस पे है. पॉजिटिव y एक्सिस पे आप ट्रेस करोगे, इसीलिए ऐसे ट्रेस करोगे ना, ये y एक्सिस होगा तो आप x ये 0 है, तो यहाँ से पॉजिटिव y एक्सिस पे ट्रेस करोगे. दैट इज why it will be positive +4 volt. I hope this is clear. Okay, so that was the topic of discussion for today, measurement of AC and DC voltages using CRO. Next, we'll come back with measurement of phase using Lissajous pattern, and I'll see you in the next video. Thank you.